So this is the question number 4 from 2023 midterm examination paper, and this question comes under the topic Boolean logic. So in this particular question it has been asked which logic gate is used to reverse the input. यानी कि अगर आपके इनपुट आपका 0 है तो क्या कर दे 1 कर दे, और 1 है तो क्या कर दे उसको 0 कर दे। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा गेट है, नॉट गेट। ओके, नॉर गेट किसके लिए है आपका, जो और है उसको इन्वर्स करने के लिए, यानी कि और क्या करता है आपका एडिशन, तो एडिशन को इन्वर्स करने के लिए। नैंड क्या है, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन को इन्वर्स करने के लिए। और एक्सओर क्या है आपका, जब दोनों इनपुट आपके अलग अलग होंगे तभी आउटपुट आपका हाई आएगा। हेंस फॉर दिस वन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। Now, based on the similar concept, we have a practice question for you. You need to answer this one in comment box. What will be the right answer for this one? Okay, guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay, then thanks for your time.